Rahim, dear students, Assalamu alaikum. I hope students you are doing good. Chapter number 1 discuss कर रहे थे introduction to statistics. Today lecture number 7 and topic is rounding of numbers. तो students आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा राउंडिंग ऑफ नंबर्स को. तो students आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक जरूर दें. तो let's start the topic rounding of numbers. First of all, I will explain the first point of this lecture, that is rounding of numbers. The contents of this lecture is based on these 2 points. First one, I will explain rounding of numbers, and second point is rules of rounding of numbers. The contents of this lecture is based on these 2 points. First one, I will explain rounding of numbers, and second one is the rules of rounding of numbers. Rounding of numbers is a mathematical technique used to simplify numbers by reducing the number of significant digits while maintaining a value close to the original number. This process makes calculation easier and results more interpretable, especially when dealing the long decimal numbers. In rounding, a number is adjusted to a specific place value such as nearest tenth, hundred, thousands or decimal place according to some specific rules. Rounding of numbers is widely used in scientific calculations, financial transactions, statistical analysis, and everyday approximation to make numbers more manageable. इन राउंडिंग ऑफ नंबर्स स्टूडेंट्स कोई भी नंबर जो है उसको हम लोग इजीली राउंड कर सकते हैं नियरेस्ट टेंथ, हंड्रेड, थाउजेंड और वन डेसिमल प्लेस और टू डेसिमल प्लेस. तो राउंडिंग ऑफ नंबर्स इज वेरी यूजफुल इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. In the second point, I will discuss the rules of the rounding of numbers. In rounding of numbers, we retain the desired number of digits taken from the left and drop the remaining digits. Rules of rounding of numbers are given below. Now the first rule is that the last digit of the retained part is increased by 1 if the first digit of the drop part is more than 5 or 5 followed by at least one non-zero digits. नाउ स्टूडेंट्स अगर आपके पास अब ड्रॉप पार्ट जो है अगर आपके पास मोर देन 5 है जहाँ से आप इसको ड्रॉप कर रहे हैं वो अगर मोर देन 5 है तो उसमें आपने 1 इंक्रीज कर देना है. और इन द सेकंड सिचुएशन अगर आपके पास ड्रॉप पार्ट जो है वो 5 है और उसके फॉलोइंग नंबर्स जो हैं वो आपके पास एटलीस्ट एक उसमें नंबर जो है वो नॉन ज़ीरो डिजिट होना चाहिए तो देन फिर हम लोग उसमें एक इंक्रीज कर देंगे, 1 इंक्रीज कर देंगे. फॉर एग्जाम्पल द नंबर 24.6501 और यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप पार्ट इज 5 और इसको हम लोग राउंड करना चाहते हैं फ्रॉम 1 डेसिमल प्लेसेस पे. तो आप लोग राइट करेंगे 6 1 डेसिमल प्लेसेस मींस के 6 में हमने एक इंक्रीज करना है. तो आपके पास ड्रॉप पार्ट जो है 5 है और उसके आगे जो नंबर्स हैं वो आपके पास एक एटलीस्ट वन नॉन जीरो डिजिट है. सो 6 में हम लोग एक ऐड कर देंगे विच इज 7. तो नाउ द rounded number is 24.7. In the second example, number is 28.7623 और drop part जो है वो हमारे पास 6 पे है तो 6 जो है वो आपके पास more than 5 है तो now आप लोग जो है वो ऐड कर देंगे 7 में 1 increase कर देंगे तो आपके पास 1 डेसिमल प्लेसेस पे जब इसको राउंड करेंगे इस नंबर को that is 28.8. So this is the two examples of rounding of numbers of first rule. The second rule of rounding of number is that the last digit of retained part remains unchanged if the first digit of the drop part is less than 5. For example, the number 4.54472 is rounded off 2 decimal places. नाउ स्टूडेंट्स आपके पास ड्रॉप पार्ट जो है यहाँ पे 4 है और इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड करना है. तो 4 इज द लेस देन 5. रूल हमारे पास है 4 आपके पास अगर लेस देन 5 है तो हम लोग इसमें जो ड्रॉप पार्ट है वो हमारे पास 4 यहाँ पे और 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसको हमने राउंड करना है. तो 4 में हमारे पास कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि बिकॉज ड्रॉप पार्ट इज लेस देन 5. तो आंसर इज 4.54. In the second example, the number is 59.73201 और इसको भी हम राउंड करेंगे 2 डेसिमल प्लेसेस पे. Here the drop part is 2 और 2 जो है आपके पास यहाँ पे 5 से लेस है सो 3 जो है इसमें कोई चेंज नहीं होगा तो 3 as it is रहेगा. तो आंसर is 59.73. So that is the second rule of rounding of numbers. The third rule of the rounding of numbers
is that if the first digit of the drop part is exactly 5 or 5 followed by all zeros. दो सिचुएशंस हैं स्टूडेंट्स, आपके पास ड्रॉप पार्ट जो है वो अगर एग्जैक्टली 5 है या 5 के बाद आगे फॉलोइंग नंबर्स आर द ऑल जीरोस. द प्रैक्टिस इज टू इंक्रीज द लास्ट रिटेन डिजिट बाय 1 इफ इट इज ऑड. एक 1 का इंक्रीज करेंगे अगर आपके पास रिटेन डिजिट जो है वो ऑड है, एंड लीव इट अनचेंज इफ इट इज इवन. फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर है 1.7500 और ड्रॉप पार्ट जो है वो यहाँ पे स्टूडेंट्स 5 है और 5 के बाद फॉलोइंग नंबर्स आर 00. देन रिटेन पार्ट जो है आपके पास 7 और 7 जो है ऑड है. नाउ वी इंक्रीज 1 टू 1 डेसिमल प्लेसेस. तो आंसर इज 1.8. In the second example, the number 27.85, आपके पास नंबर 27.85 है और यहाँ पे आपके पास ड्रॉप पार्ट जो है 5 exactly 5 है और इसके बाद रिटेन पार्ट जिसमें आपने 1 डेसिमल प्लेसेस पे अपने नंबर को राउंड करना है which is even. सो देर इज नो चेंज, हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसमें 1 का इंक्रीज नहीं होगा. तो आंसर इज 27.8. So this is the third rule of rounding of numbers. In this lecture, students, I have been discussed 2 points. First of all, I explain introduction about the rounding of numbers. In the second point, I explain rules of rounding of numbers. तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अपना ख्याल रखिएगा और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपना फीडबैक जरूर दें. ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू.